Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So yesterday we saw there was some recovery in the index and Nifty was up by 80 points, closing almost near 19,600 level. So during the day, IT and pharma were the stocks where the strength was seen, whereas PSU Bank was the one sector where I saw some amount of good amount of selling pressure. Further, even if you look at the railway and the cement space, also there were some few stocks which were looking good and that made some strength to the market. So now, if we look at the Nifty chart, even though there was a bounce, we will still maintain that we are trading in the range, and this 19,300, 19,200 in the lower side will be the support zone, and on the higher side first immediate intra-week support, intra-week resistance is at 19,600 and about that 19,800. So this is the range bound session which I believe will be there in the Nifty for next 1 or 2 weeks. Only in the near term, if 19,800 level is taken out, then the aggressive bullish momentum will be there. And on the way down, when 19,100 is broken, then the loss of momentum will be there, or we'll be more cautious and we will be stay away. So 19,100 to 19,800 is the larger range for the Nifty is what I can see. Coming to Bank Nifty was when the Nifty was up by 80 points, Bank Nifty closed down by 42 points, and this Bank Nifty is underperforming. There are, for example, SBI and Axis was the counter which traded with negative bias, and the Bank Nifty has closed below 45,000 level. So right now, this 45,000 level is acting as a resistance, and on the way down, by any chance during the week, 44,500, which is likely to be the immediate support level. If that is broken, then I think there can be some another 1,000 odd points of correction on the lower side. So we'll be very cautious on the Bank Nifty. 44,500 is the immediate level we are going to watch. Below that, we'll be cautious. Coming to derivatives report, so Nifty futures, yesterday we saw there was a short covering to the tune of 0.79%, which is a decline in OI by close to 2,000 contracts. The put call ratio, there was some gains from 1.01 to 1.19 levels. So this slightly strength. And if you talk of the supported resistance, this 19,600 and 20,000 strike price, there is a lot of call writing. So this is the resistance. Lower side 19,500 and 19,400. It's a lot of put writing. So that will be acted as support. Bank Nifty, there was a fresh short built up to the tune of 2.76%, and which is an increase in OI by close to 3,600 contracts. The put call ratio has declined from 0.82 to 0.75 ratio. So this is again a slight uh, kind of little negative. From the call writing point of view, 45,000 strike price still will act as a resistance. Lower side 44,500 strike price put option, so that will act as a support. Beside this, there are few stocks which are trading near close to the support levels. We can keep a watch on the Asian Paints, and then to some extent this PFC is also looking good on charts. Manappuram, there is a result, post result after if the momentum is there, then I think Manappuram can also be kept on a watch list. And capital goods is something which is also very positive. L&T and Siemens, both results are there. Maybe L&T results are done, Siemens results are due. Post result after 1 or 2 days, if the momentum is sustained, then I think the capital goods segment will space will also perform. Lastly, the FI data, they have added some close to 6,000 contracts in yesterday's index future, and they are net short by 18,000 contracts. And this long short ratio stands at 45% as of now. So that's the view, technical view. I'll hand over to Devang sir for more research updates. Thank you. Thank you, Brijesh sir. Good morning, all. So, fundamental news from my end. Firstly, on MapMy India. So, MapMy India reported robust numbers of 37% YOY growth in revenues. However, margins dipped by 400 BPS Q1 FY24 because IoT revenues of theirs has increased. So that is more of a hardware component, which has a margins of around 6%. Hence, the it seems that the margins will be under pressure because of this hardware revenues in the short term. MapMy India has reiterated its vision of 1,000 crores in 3 to 4 years. The company is bullish on EV, international markets, ONDC tie-up with Hero
Hero Motocorp, and drones. However, margins remains a point of concern as the company plans to sell hardware with software. Hence, we have a neutral view on the stock. Secondly, on BEML, so the company secured a letter of acceptance from Bangalore Rail Corporation for supplying rolling stocks worth rupees 3,177 crores. So this is positive for the company. In Paytm, the PwC India has resigned as auditor of Paytm Payment Services. The resignation follows an August 2nd letter by 197 Communication, which cited that change in auditor at holding company level, keeping in mind the company's practice of aligning auditor of holding company with material subsidiary. Hence, this is a neutral kind of a news, not major impact on the company. For retail, the company has received a work order from Pimpri Chinchwad Smart City for providing end-to-end services for monetization of PCSCL city network infrastructure on revenue sharing. The estimated annual revenue from the contract is 70 crores and total revenue over a period of 10 years is 700 crores. So this is positive for retail. For MMTC, Securities Exchange and Board of India, that is SEBI, has cancelled the registration of the company as a stockbroker for its involvement in illegal paired contract in case of pertain to the defunct National Spot Exchange Limited. Hence, this is negative for MMTC. Wellspun Specialty Solutions, the company has received an order aggregate rupees 37 crores for supply of stainless steel bars from a domestic customer, unrelated party. The said order is expected to be executed by the end of October 2023. This bodes well for Wellspun Specialty. Godrej Consumer has reported numbers. The revenue was up 10% to 3,448 crores versus Bloomberg estimates of 3,472 crores. Net profit was, however, down 8% to 318 crores versus Bloomberg estimate of 460 crores. So this is kind of a lower than expected profitability. And EBITDA was also up 23% to 642 crores and Bloomberg estimated 685 crores. So broadly, it seems that from a profitability point, the results were below estimates. And hence, we believe that it might be negative for Godrej Consumers. Second, on Torrent Pharma. So Torrent Pharma also reported numbers. So revenue was up 10% to 2591 crores versus Bloomberg estimate of 2648 crores. Net profit was down 7% versus 378 crores versus Bloomberg estimate of 359 crores. And EBITDA was up 11% at rupees 791 crore versus Bloomberg estimate of 798 crores. So broadly, although on the revenue front it was below, but on the profitability front it was in line or above. Hence, it's broadly neutral for Torrent Pharma. Tata Chemical, lastly, just on Tata Chemical. So Tata Chemical also came out with its numbers. So revenue was up 6% to 4218 crores versus expectation of 4902 crores. Net profit was down 8% to rupees 587 crores versus Bloomberg estimate of 613 crores. So on all fronts, revenue and profitability front, it was below estimates, and hence it is negative for Tata Chemicals. That's it from my end. Over to you, Shantanu. Yeah, thank you, sir, and good morning, all. So we'll start with some further updates as a lot of companies came up with their results yesterday. First of which is about Max Healthcare, where according to the numbers, the net profit of the company was up by 38.9% to rupees 240 crores. Revenue was up by 20.4% at 1,285 crores compared to year on year, it was 1,067 crores. So overall, the results were quite positive. Next are India Glycol, where the net profit of the company is at rupees 51 crore versus rupees 29 crores. Revenue was up by rupees 1,894 crores versus rupees 1,868 crores on a year-on-year basis. Again, the numbers were quite positive from the company's perspective. Next is Bayer Crop, where the net profit was at rupees 328 crores versus the pool of rupees 302 crores.
Revenue is at rupees 1,740 crores, and again, overall quite positive numbers for Bayer Crop. Uh, Speaking about PB Fintech, the revenue of the company was up by 31.9% at rupees 666 crores. Adjusted EBITDA was at rupees 23 crores versus the loss of rupees 66 crores on a year-on-year basis. So again, quite positive results. Jupiter Vegan, the net profit of the company was at rupees 63 crores versus rupees 13 crores. Revenue was 753 crores versus rupees 295 crores on a year-on-year basis. Speaking of Indigo Paints, the net profit was at rupees 31 crores versus rupees 20 crores. Revenue was 288 crores versus rupees 224 crores on a year-on-year basis. So again, quite positive results for the company. Speaking of HDFC Bank, the bank is projected to increase weight in FTSE emerging all cap index from 0.81% to 1.52%, which should act positively on the stock of HDFC Bank. Lupin, the digital health launch has launched live digital heart failure clinic in India, so quite a positive update for Lupin as well. Speaking about Adani Green, INQ Holdings have bought 2.7% stake in Adani Green in a bulk deal, which should act as a positive update for the company. Speaking about insurance stocks, mandatory insurance for shops and establishments in Maharashtra has been updated by the government. So again, it should act positively on the prices of insurance stocks going into today. The next update is on ICICI Lombard, where the July general insurance premium jumped by 22% on a year-on-year basis, which was quite positive. Star Health, again, the July general insurance premium jumped by 17% on a year-on-year basis for the company. Speaking about Monte Carlo, according to the numbers, the net loss of the company was at rupees 11.6 crores versus rupees 3.9 crores. Revenue was at rupees 139 crores versus rupees 113 crores on a year-on-year basis. The numbers overall were quite neutral. Speaking about Inox Wind, a block deal worth rupees 500 crores at max 5% discount has happened to CMP media, according to the media sources. Overall, it should be a neutral update for the company. Coming to Gland Pharma, according to the numbers, net profit of the company was at rupees 194 crores versus rupees 119 crores. Revenue was at rupees 1,209 crores versus rupees 857 crores on a year-on-year basis. Overall, the results were quite positive. Uh, Indigo Paints, again, the net profit of rupees 31 crores versus 20 crores. The revenue was rupees 288 crores versus 224 crores on a year-on-year basis. Finally, speaking about IOC, where government has extended current IOC chairman Mr. Madhav Vaidya's term by 1 year. Overall, it should be a neutral update for the company. So this was all from my side. I'll now hand it over to Kshitija ma'am for the further updates. Thank you. थैंक यू सर गुड मॉर्निंग एवरीवन अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं मैपमा इंडिया जो है उन्होंने रिट्रेट किया है उनका जो विजन है 1000 करोड़ का नेक्स्ट 3 to 4 years में कंपनी बुलिश है ईवी सेगमेंट में इंटरनेशनल मार्केट है ओएनडीसी का और रिसेंटली टाइप किया है हीरो मोटोकॉर्प के साथ एंड मार्जिनली स्टेबलाइजेशन है वो पॉइंट में थोड़ा कंसर्न है क्योंकि कंपनी का प्लान है कि वो सेल करेंगे हार्डवेयर विद सॉफ्टवेयर तो अभी स्टॉक के ऊपर न्यूट्रल व्यू है देन नेक्स्ट अपडेट है बीईएमएल के ऊपर कंपनी ने सिक्योर किया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से जो सप्लाई करेंगी रूलिंग स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट 5 RSDM उसकी जो वैल्यू है वो 3,177 करोड़ की है देन 197 कम्युनिकेशन है मतलब पीडब्ल्यूसी इंडिया उन्होंने रिजाइन किया है एज अ ऑडिटर पेटीएम पेमेंट सर्विस से और ये रेजिग्नेशन फॉलो हुआ है अगस्त से और 2 लेटर बाय जो 197 कम्युनिकेशन है उन्होंने चेंज किया है ऑडिटर होल्डिंग कंपनी लेवल पे और कंपनी के जो प्रैक्टिसेस है अलाइन ऑडिटर और जो होल्डिंग कंपनी है मटेरियल सब्सिडरी पीडब्ल्यूसी उन्होंने
अपडेट किया है कि वो उन्होंने रेजिग्नेशन किया है वो। देन नेक्स्ट अपडेट है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर। कंपनी को वर्क ऑर्डर मिल रहा है पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी जो है वहां से, जो बेसिकली प्रोवाइड करेंगे एंड टू एंड सर्विसेज, जो मोनेटाइजेशन होगी PCSS सिटी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होगा। और इसका जो एस्टिमेटेड एनुअल रेवेन्यू है कॉन्ट्रैक्ट का वो अराउंड 70 करोड़ का है, और टोटल रेवेन्यू है 10 साल के लिए 700 करोड़ का। देन MMTC जो है द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है, उन्होंने कैंसिल किया है रजिस्ट्रेशन कंपनी का एज ए स्टॉक ब्रोकर। और ये जो इन्वॉल्वमेंट है इन इलीगल पेयर कॉन्ट्रैक्ट और इन केस ऑफ रिटर्न करेंगे डिफंक्ट नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड से। द नेक्स्ट अपडेट है वेलस्पन सोसाइटी सॉल्यूशन के ऊपर। कंपनी को ऑर्डर मिला है और उसकी जो एग्रीगेटिव अमाउंट है वो 37 करोड़ की है, जो बेसिकली सप्लाई करेंगे स्टेनलेस स्टील बांस जो डोमेस्टिक कस्टमर में और अनरिलेटेड पार्टीज को। और ये ऑर्डर जो है एक्सपेक्टेड है कि एग्जीक्यूट होगा एंड ऑफ द अक्टूबर 2023 तक। देन गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स आए थे। रेवेन्यू है आप 10% से कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है 3448.9 करोड़ का। नेट प्रॉफिट डाउन है 8% से 318.82 करोड़ का कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। EBITDA अप है 23% से 642.84 करोड़ है। मार्जिन्स भी 18.6% से हायर है। देन नेक्स्ट अपडेट है टोरेंट फार्मा के ऊपर। कंपनी के नंबर्स आए थे। रेवेन्यू जो है Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 का वो 10% से हायर आया है। कंपनी ने 2591 करोड़ का रिपोर्ट किया है। नेट प्रॉफिट 7% से अप है 378 करोड़ का कंपनी ने रिपोर्ट किया है। EBITDA भी अप है 11% से। मार्जिन है 30.5% से। देन नेक्स्ट अपडेट है टाटा केमिकल के ऊपर। नंबर्स में रेवेन्यू जो है वो अप आया है 6% से। कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया 4218 करोड़। नेट प्रॉफिट डाउन है 8% से 587 करोड़ का कंपनी ने रिपोर्ट किया है। देन EBITDA अप है ओनली 3% से 1043 करोड़ रिपोर्ट किया है। EBITDA मार्जिन 24.7% से हाई है। देन नेक्स्ट अपडेट है मैक्सवेल के भी नंबर्स आए थे। नेट प्रॉफिट अप था 38.9% से 240 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया। रेवेन्यू अप था 1285 करोड़ का रिपोर्ट किया है। इंडिया ग्लाइकोल के भी नंबर्स आए थे। नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है 51 करोड़ का। रेवेन्यू जो है वो 1894 है करोड़। देन बेयरकॉप के भी नंबर्स आए थे। नेट प्रॉफिट कंपनी का जो है वो 328 करोड़ रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू अप है 1740 करोड़। पीबी फिनटेक के भी नंबर्स आए थे। रेवेन्यू अप है 31.9% से। कंपनी ने रेवेन्यू रिकॉर्ड रिपोर्ट किया है 666 करोड़ का। EBITDA है एडजस्टेड 23 करोड़। जुपिटर वैगन्स के भी नंबर्स आए थे। नेट प्रॉफिट कंपनी ने 63 करोड़ का रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू जो है वो 753 करोड़ का है। इंडिगो पेंट्स के भी नंबर्स आए थे। कंपनी ने 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू 288 करोड़ का है। हम लोग कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर तो लास्ट टाइम 224 करोड़ था। देन नेक्स्ट अपडेट है किम्स के नंबर्स आए थे। किम्स का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया 81 करोड़। रेवेन्यू जो है 606 करोड़ है। देन SHK है, उनके नंबर्स आए थे। नेट प्रॉफिट है वो 27 करोड़ था। लास्ट ईयर से हम लोग कंपेयर करते 22 करोड़ था। रेवेन्यू जो है 445 करोड़ था। और देन ग्लैंड फार्मा के भी नंबर्स आए थे। नेट प्रॉफिट कंपनी ने 194 करोड़ का रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू जो है वो 1209 करोड़ रिपोर्ट किया है। देन ITD सीमेंट है, उनके नंबर्स आए थे। नेट प्रॉफिट कंपनी ने 52 करोड़ का रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू है 1833 करोड़। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो 1098 करोड़ लास्ट टाइम था। देन HDFC बैंक है, उसमें जो बैंक का जो प्रोजेक्टेड है इंक्रीज हुआ है वेट HDFC इमर्जिंग ऑल कैप इंडेक्स, जो पहले 0.81% था अभी 1.52% है। देन लुपीन ने डिजिटल लॉन्च किया है लाइव डिजिटल हार्ट फेलियर क्लिनिक इंडिया में। तो ये लुपीन के लिए पॉजिटिव होगा। अदानी ग्रीन के INC हॉलीडेज है, उन्होंने बाय किया है 2.7% से अदानी ग्रीन बल्क डील से। देन इंश्योरेंस स्टॉक है, उसमें मैंडेटरी इंश्योरेंस है शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट इन महाराष्ट्र में, तो इसके ऊपर मूवमेंट देख सकते हैं इंश्योरेंस स्टॉक में। ICICI लंबार्ड है,
उनका जो जुलाई का जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 22% से जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। स्टार हेल्थ का भी जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम जंप हुआ है 17% से ईयर ऑन ईयर। देन मोंटे कार्लो के नंबर पर नेट लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया 11.6 करोड़ का, रेवेन्यू अब है 139 करोड़। ओलेक्ट्रा है, उसके भी नंबर आए थे। नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया 18.1 करोड़ का, 8.4% से हायर है। रेवेन्यू डाउन है 23.2% से 216 करोड़ का। लास्ट टाइम से ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो 281.1 करोड़ था। देन इंडिया अकाउंट के भी नंबर आए थे। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी ने 74 करोड़ का रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू जो है वो 741 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर पे कंपेयर करें तो लास्ट टाइम 703 करोड़ था। देन आईओसी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है करंट जो आईओसी के चेयरमैन है माधव वैद्य, उनका टर्म 1 ईयर पे। देन आयरन स्पिन उसके ऊपर अपडेट है कि ब्लॉक डील हुआ था अराउंड 500 करोड़ का, मैक्सिमम 5% डिस्काउंट था सीएमपी पे, जो मीडिया के जो सोर्सेस है उसके अनुसार। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the morning con call. Have a nice day.